guys, welcome back to the channel and we are on question. Read at least one page a week. हफ्ते में एक पेज तो पढ़ ही लेगा. That's for sure है. इतना भी आलसी नहीं है. Assuming that Peter will not skip days and will read as much as he can every day, determine on which day of the week he will read the last page of the book. Last page कौन से डे को रीड करेगा ये बताना है. Assuming that Peter will not skip days, कोई भी डे स्किप नहीं कर रहा है. तो इनपुट देख लेते हैं. टेस्ट केसेस है नहीं. एक एन दिया है इन द रेंज ऑफ 1 to 1000. The second line contains 7 non-negative space separated integers that do not exceed 1000. Those integers represent how many pages Peter can read on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, blah blah. It is guaranteed that at least one of those numbers is larger than 0. कितना बोला पड़ा. Output. So print a single number, the number of the day of the week when Peter will finish reading the book. The days of the week are numbered starting with 1 in natural order. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. ठीक है. सो इनपुट को जिस तरीके से कि सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस दे दिए और आपको हर दिन में पीटर कितने पेजेस पढ़ेगा ये दिया हुआ. तो मंडे का ये, ट्यूसडे का ये, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. सॉरी, इट्स वेडनेसडे. So after that, and for the output, we need to print on which day he will finish his book, and for that it is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. And for Monday it is 1 2 3 4 5 6 7, right? 1 2 3 4 5 6 7. So yeah, it's quite simple problem. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ना कि कितने वीक्स से वो गो थ्रू करेगा. That thing don't. Let's try coding it out. Problem and take n for all the number of pages the book got. Create a vector of read with 7 days, right? Take all the inputs. Now, so there is a issue with this thing. If अगर मैं just to check कि कितने number of full weeks passed हो गए हैं, अगर मैं इसका sum ले लेता हूँ this part में, so there can be two things कि या तो जो भी weeks full weeks passed हो गए हैं तो that would end up here. तो मुझे लगेगा कि वो लास्ट डे पे ख़त्म हुआ है, ठीक है. बट इन दिस केस यहाँ पे तो ख़त्म नहीं हो सकता. किसके मैं एक बार सम 1 है तो अगर मैं सम n% सम करूँ तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर लेगा इसको. तो मुझे ऐसा लगेगा कि जब भी मैं फुल ट्रैवर्सल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ख़त्म होगा. तो फॉर दैट रीजंस हम फुल वीक्स वाला कंसेप्ट तो नहीं ले सकते, ठीक है. तो हमें मूव भी करते हुए चलना है. तो आई को 0 पकड़ते हैं and move करते हैं while n is greater than 0, right? और n में से माइनस कर देते हैं जो भी डे वो जो भी रीड करे, and if n becomes less than 0 तो ब्रेक, ठीक है. Also for equal to 0 and increment I, और I 7 से बाहर चले जाएगा तो for that I equal to I percentage 7. तो सब कुछ सही लग रहा है. and after that just print out I plus 1 and return from here. तो चला के देख लेते हैं इसको सबसे पहले. showing 6 which is correct. इसको और देख लेते हैं. करेक्ट. डाउनलोड करते हैं इसको.
और सबमिट करके देखते हैं। So you're running accepted. So yeah, that's it for today videos guys. See you in the next one.